Yeah. So, good afternoon, everyone. Today's session is all about breakout trading and how you should trade breakouts effectively, and how you can avoid false breakout, how you can increase your position during breakouts. So, this session is brought to you by Techno Charts, and I am Jainesh Kasliwal, presenting this session. I've been trading from the past 2 years only, but as soon as I started my trading journey, I was having someone to guide me during the start of my journey. So starting से ही मैंने FNO futures and options और intraday trading नहीं की, तो I did not blow up account, and I did not join any paid services like most of the people during their beginning of stock market journey do. क्योंकि लोगों के पास में गाइड करने के लिए कोई रहता नहीं है स्टार्टिंग में, तो दे उनको स्क्रीनशॉट दिखते हैं प्रॉफिट्स के, और दैट इज व्हाई दे यूज पेड सर्विसेज एंड एवरीथिंग. सो ऑलवेज दिस इज माय एडवाइस टू एवरीवन कि ऑलवेज हैव समवन टू गाइड यू इफ यू आर इन योर बिगिनिंग ऑफ योर स्टॉक मार्केट जर्नी. ओके. Then this was my introduction, and as you all know, I trade only in cash market, and I trade mostly small caps and mid cap stocks due to their high volatility and uh, due to their high volatility. Okay, so just let me, as a beginner, if you are a beginner also, you will understand this session because we'll cover the basics of breakouts and everything will be covered in the session. So basically, स्टॉक मार्केट के तीन फेजेस होते हैं. देयर इज एन अप ट्रेंड, देयर इज अ साइडवेज ट्रेंड, एंड देयर इज अ डाउन ट्रेंड. Simple, this is the cycle of stock market. Every stock will be in an uptrend, will be in a sideways trend, will be in a downtrend, and then will be again in a sideways trend. So this cycle keeps on getting repeated every time a stock is there, it is present. Okay, simply I will explain you with some examples. जैसे one second. So I am using a TradingView as my website for all the charting. So this is a free website that everyone can use, and I have applied one indicator in my chart, and that is the moving averages. How to apply moving averages? You can just type here 3EXPO. You will get 3 exponential moving averages by Trade Titan, and you can apply it. So I am using the settings as 21, 50 and 200 as my settings. The red line is the 21 line, the green line is the 50 line, and the black line is the 200 EMA line. Okay, so these are the basic settings that I hope everyone might have already known. So I'll just hide the moving averages. So in this chart, I'm currently using a okay. Yeah. So अभी हम we are looking currently at a chart of Ganesh Housing, for example. So this was a clear-cut sideways trend, and then the stock is trying to move up. So a stock will always move in these four phases: uptrend, sideways trend, downtrend, and then again sideways trend. Okay. So what does a breakout mean? Breakout का मतलब क्या होता है? Basically, whenever a stock is stuck in a range of resistance and support. What does support and resistance mean? Support means from where the price is trying to bounce. Support means from where the price is trying to bounce. Here, this is the support line, and resistance mean from where the price is falling after touching the line, from where the price is falling. Okay, so if we get 3 points on a line, then it is known as the resistance line. We should have minimum 3 points on a single line of a stock, then that is known as a resistance line. And if we get 3 lines on a support line, then it is known as a support line. Okay, so 1, 2 and 3, for example. Okay, so this is basic support and resistance for a stock. So how can we plot it in the TradingView platform is, I'll just open one chart of Birlasoft which recently broke out. Okay, yeah. So in this chart we can clearly see on this area
these are the points. These are the points for resistance 1, 2, 3, and these are the points of supports, right? So just using just using the tool, we can mark the support and resistance line like this. This is a resistance, clear cut, and this is a support. Okay, I hope this is clear. What does a support and resistance mean? Now, whenever a stock moves out of the resistance line with good volumes, okay, volumes are very important part of trading. Why? Because volumes define the strength of buyers and the strength of sellers. So this is a resistance line, for example, and whenever a stock breaks out of a resistance line, it is known as breakout. Whenever a stock breaks down the support, it is known as breakdown. These are the simple terms that we'll be looking for. Okay, breakout, breakdown, sideways trend, uptrend, downtrend. I hope everyone has understood this. What are the common terminology that we'll be looking for? So what are the basic rules of buying a breakout are, first of all, see, a breakout will happen after some resistance line is broken. Now during breakout, you should always look for volume pop-ups. Okay, what does volume pop-up mean? See, during this sideways trend, we will mark the support and resistance, for example. For example, if this is a resistance line, just move it down, and this is the support line, for example. Okay, now during the breakout, we always have to look for volume pop-up, and during the sideways trend, we always have to look for volume contraction. Now, how to understand the volume pop-up is, you see this breakout that is happening after the candle has closed above the resistance line, and you have to check at the volume candle on that chart. Okay, now we can see that the breakout has happened on huge volumes, and during the sideways trend, the volume was flat. Okay, and continuously whenever the price was rising, we can see traces of breakouts or traces of institutional buying that is happening. Okay, so this is the ideal structure of a breakout. You should always look for institutional buying during the sideways trend. In what does that mean? In a sideways trend, whenever you see big volume spikes, that means the institutions are getting into that stock. Okay, and during that, and you should always look for breakout that is happening on huge volumes, that is greater than the average volumes of the chart. Okay, so Sorry, Janish, can I interrupt for a second? Only a second. please use the chat box for Chat any box. kind of doubt. ठीक है. ओके, तो हमें ब्रेकआउट के समय क्या देखना है? वॉल्यूम्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल रूल्स. और जब ट्रेंड हमेशा जब साइडवेज होगी, तब आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग के लिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग के साइंस देखना है. व्हाट आर द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग? कभी भी आपको बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिखते हैं कभी भी चार्ट में. whenever you see big candles in a chart in a sideways trend and with that are happening with good volume breakouts, okay, so this is an ideal chart that you should be looking for. Okay, you should not be trading all kind of breakouts. You should look for this kind of breakout where stock is in sideways zone from a very long time and there are signs of institutional buying in the trend, so that you understand you're staying with the you're staying with the bigger players. Okay, now you always have to understand one thing, कि these kinds of volumes are always created, जो बड़े बड़े volume bars होते हैं, these are always created by institutions, जो high net worth investors, mutual funds, FIIs, DIs. These are the people who create such kind of volumes. A normal person, a retailer like you and me, can't create this kind of huge volume, right? Simple. Why? Because definitely we have limited amount of money, while the institutionals have unlimited, enormous sources of money, right? So this is what you have to understand, कि always breakout should happen
in the breakout should happen where institutionals are interested, and you should be investing into that stocks where the bigger players are already getting into. Why? Because see, the probability of your profit will increase when you stay with the longer term trend, when you stay where everyone is heading. सिंपल, आपको उन्हीं के वही स्टॉक में ट्रेड करना है जो स्टॉक में बड़े बड़े लोगों का इंटरेस्ट है, ताकि उनके पैसों से जो फ्लो होता है, क्रिएट द फ्लो दैट इज क्रिएटेड बाय द अमाउंट ऑफ मनी दे put into those stocks will help the stock to move upwards, and hence it will gain momentum. Simple. Now this is a ये जो था, हमने एक सिंपल ब्रेकआउट का सिनेरियो देखा है. सी, इधर भी देखिए आप, this is a older structure that we can see. Can you see that? One second, I will just clear this chart. Can you see during this trend of these whole sideways zone for that is happened for around 5 months? Okay, so this, whenever such kind of breakout happens after a good consolidation period, that is the time you should always enter into a stock, and not during the consolidation. You never know कि कंसोलिडेशन में आप एंटर करोगे, अगर आप बीच में ही कभी भी एंटर करोगे इन अ साइडवेज ट्रेंड, यू नेवर नो कि हाउ मच टाइम द ट्रेंड विल last, the sideways trend will last. It could be years also, it could be months also, it could be weeks also. Okay, so ये हमें पता नहीं. जैसे एसबीआई का स्टॉक जो 10 साल से एक ही साइडवेज जोन में था फॉर अराउंड 150 से 350 में, तो आफ्टर इट ब्रोक आउट ऑफ दिस रेंज, देन वो कितना जल्दी, हाउ फास्ट डिड इट मूव, आई होप यू नो दैट. सो ऑलवेज लुक फॉर इंस्टीट्यूशनल बाइंग ड्यूरिंग अ साइडवेज ट्रेंड, राइट? तो अब हमें इस ट्रेंड में व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल बाइंग साइंस दैट वी कैन सी? सिंपल, ये देखिए, कैन यू सी बिग वॉल्यूम स्पाइक्स इन अ बिटवीन ऑफ द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग हियर, हियर, one second, here. Okay, so these are the kinds of volume these are the kinds of signs you have to look for before entering into a breakout. And as soon as the breakout has happened, can you see the breakout volume candle bar? Huge volume compared to the other last previous candles. And similarly, we can see the similar structure yesterday, I mean, the breakout has happened on huge volume and the volume has come is very much compared to the last previous volumes. Now the important part is, where do you enter into breakouts? This is one of the most important questions that where everyone fails, and one of the most important things that you should know is where to enter a breakout. First thing is, all entering into a breakout should always happen as soon as the breakout has happened. Okay, now the point of why do you have to enter as soon as the breakout has happened is, see, if you enter into a stock that is breaking out on this point, for example, the breakout region for this is at around 450 rupees. So if you enter a stock at 500 rupees, 530 rupees, that is an extended stock, and it does not provide the proper risk to reward ratio. Risk to reward ratio is one of the most important aspects. Risk to reward ratio का मतलब क्या है? अगर आपका 1 रुपए दाव पे है, if you are betting for example 1 rupee on that stock, are you gaining 2 rupees on that stock minimum? अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो उस स्टॉक पे, क्या आपको उस स्टॉक पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है? If you are not getting even 2 rupees of profit on that stock, then it is not worth taking that risk into that stock. Why? Because see, एक आपको मैं एक सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड का एक एनालिसिस बताता हूं, एक सिंपल टर्म्स में. अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, मतलब क्या? अगर आपका प्रॉफिट, if you are making a profit, then you are making a profit of 2 rupees, and if you are making a loss, then you are making a loss of 1 rupee. So प्रॉफिट के टाइम पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और लॉस के टाइम पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है. सिंपल. अगर मेरे 50 ट्रेड्स भी, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, इफ only 5 trades are winners and 5 trades are losers, okay, out of 10 trades 5 trades are winners, 5 trades are losers. Simply calculate, I'm just showing a simple calculation. During winning I am making 10 rupees, but as whenever I am losing money, I am losing 5 rupees. Simple. Now in the end I will be making at around 4 to 5 rupees, deducting the taxes and everything. Okay, so
if we are not maintaining a risk to reward ratio from of 1:2 also minimum, then we will not be profitable with 50% win ratio. If, for example, we keep a risk to reward ratio of 1:1, then अगर हमारे if only आर ब्रेक इवन, मतलब क्या, हम कब प्रॉफिट में रहेंगे, जब हमारे 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे और 4 ट्रेड्स लॉस मेकिंग रहेंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे. बट वेन एवर वी कीप अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2, simple, then we will be profitable with 50% win ratio also, and we will be making far more money compared to 1:1. So आपको पहला एक रूल ये, you have to make this rule first, is always enter into a breakout at the time of breakout only. This, for example, is the breakout region, and so you have to keep alerts. आपको alert का इस्तेमाल करना पड़ेगा. You have to keep alert, price signals or anything where you will get notification as soon as the breakout region has been crossed. Okay, for example, this 450 is the breakout region, so you can keep an alert of 460 of on this stock कि as soon as the price will touch the 460 area, I will go and buy that stock. Now the point is, sometimes you may get into that you may get into mind कि if what happens if the breakout fails at the end of the day. Simple, this is one of the most common scenarios that everyone faces. What happens during a breakout failure? Now the most important thing during a breakout is not entering into a stock greater than 50% of your whole desired quantity. मतलब क्या, अगर आपको कोई समझो बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर्स खरीदने के थे. Okay, if you wanted to buy 100 shares, ideally what should you do? Ideally during the breakout region, ideally during the breakout, ये breakout का कैंडल है, तो आपका बाइंग हमेशा ब्रेकआउट के एरिया से मैक्सिमम 3% ऊपर रहना चाहिए. अंडरस्टूड दिस? व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जांपल, दिस इज द 100 is the breakout region for that stock, so you should buy a stock maximum at 103 to have a safe entry and have a safe risk to reward ratio. Why is this rule fixed of 3%? No, this is not a fixed rule. This is just a criteria so that you may not get into wrong trades, and you should have some fixed defined rules for yourself. So you can fix this rule to 1%, 2% or 3% or 4%, but you should always stick to that rule. Why? Because अगर आपके पास रूल्स नहीं रहेंगे तो you will go randomly and buy that stock, buy each and every stock. So you should always have some kind of defined rules. आपके पास डिफाइंड रूल्स रहने चाहिए हमेशा कि मैं जब भी ब्रेकआउट होगा तो मैं कौन से प्राइस तक बाय करूंगा. तो जनरली माय रूल इज एट अराउंड 2% कि इफ द ब्रेकआउट रीजन इज एट 100 रुपीज, समझो ये एरिया मेरा 100 रुपीज का है, तो आई विल बाय दैट स्टॉक मैक्सिमम एट 103 रुपीज एंड नॉट मोर देन दैट इफ आई हैव मिस द एंट्री. ओके, नाउ तो वी आर यूजिंग, हमने यूज कर लिया, ये एक रूल बना लिया कि एक है कि हमेशा लोअर एंड ब्रेकआउट के रीजन के पास में ही बाय करना है, एंड दैट शुड बी मैक्सिमम 3% ऑन दैट. सेकंड रूल इज ऑलवेज ड्यूरिंग द ब्रेकआउट you should always buy 50% of the quantity during the breakout. Why? Because always there are chances of breakout failures, right? Now it may also happen कि you may buy at the starting में, दिन के स्टार्टिंग में at around 10 AM breakout हो गया, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया. Okay, now you have bought that stock for example, and now it may happen कि at the end of the day आपने स्टॉक तो खरीद लिया, फिर वो नीचे आकर क्लोज हो गया. तो it's always better to buy 50% of your whole desired quantity during the breakout that has happened. Okay, now why 50%? If breakout fails, then I will be losing only on 50%. अभी हम 3 सिनेरियो देखते हैं. कभी भी ब्रेकआउट के बाद में 3 चीजें हो सकती है. ठीक है, ये ब्रेकआउट का लाइन है, ये ब्रेकआउट का कैंडल है. What are the 3 things that can happen? One thing is the stock will move up. Second thing is the stock will retest again. Third thing is the stock will move down. Now अभी मैंने आपको ये 3 सिनेरियो बता दिए, एक कैंडल में 3 सिनेरियो बता दिए. अब क्या होगा? हमने क्या खरीदा स्टार्टिंग में? वी हैव ओनली बॉट अराउंड 50%, राइट? हमने क्या खरीदा? 50% खरीदा. इसके बाद में कभी भी अगर स्टॉक ऊपर जाता है, इफ द स्टॉक इज मूविंग अप, विल वी हैव रिग्रेट और फोमो? फोमो मतलब क्या कि स्टॉक ऊपर भाग गया है, हमारे पास तो एक भी स्टॉक क्वांटिटी नहीं है, तो वी आर बाइंग एट एक्सपेंसिव प्राइस. तो फोमो
is the worst enemy of a trader. Fear of missing out is one of the worst enemies of a trader. Okay, so if you are having 50% and if the stock moves up, are we having FOMO? No, we are not having FOMO because we already have 50, at least 50% quantity. Second thing is, if the stock has moved up and then again retested the breakout region, मतलब क्या? Simple, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ BSC का. We'll look at the examples also so that you understand everything. ये एक हमारा लाइव चार्ट है. कैन एवरीवन सी दिस कि दिस इज सिंपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस एरिया फॉर दैट स्टॉक एंड दिस इज अ सपोर्ट एरिया, द ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट. ओके, दिस इज अ सिंपल this is a simple structure that I was explaining you. Now, one second. You have to keep alert on this candle. Okay, you have to keep alert. Where you have to keep alert? You have to keep alert here. Now my resistance area is at around 1300. I can keep alert up to maximum of 3%. That is 39 rupees. Okay, this is the maximum. 1339 is the maximum point that I should be buying at. Why? Because ये हमने alert का इस्तेमाल किया है और ये हमारा 1300 is the resistance area, and now I have bought it at around 1338 rupees, for example. Now at the end of the day, I buy 50% of the quantity. Next day, what happens? There is a big green candle that the stock has moved 7% up. Should you go and add here? No, you should never add any stock. You should never add, one second. You should never add any stock that has moved greater than 3% from the resistance area. Why? Because you have to maintain a risk to reward ratio. See, profit kamana is not the main task in trading. Profit बनाना ट्रेडिंग का पहला मकसद कभी भी होना नहीं चाहिए. Preservation of your capital is one of the most important tasks to sustain. अगर आपको बड़ी लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको आपका पहले तो कैपिटल को प्रिजर्व करना पड़ेगा. आप कैपिटल कैसे प्रिजर्व करोगे? इफ यू आर फॉलोइंग अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड इफ यू आर फॉलोइंग सम स्टॉप लॉस एंड टारगेट रूल्स. ओके, विल गो इनटू स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स अहेड. नाउ एंट्री हमें समझ में आ गई कि वी आर एंटरिंग वेयर we are entering on this area. Now we have only entered 50%, right? Now हमारे पास 50% है, तो क्या हमारे पास are we having any FOMO कि the stock has already moved up? No. Now what happens? The stock has moved 7% on the next day. It is moving up and up. Now can we see that the reversal is happening, and slowly you will observe कि this is the market structure that every stock will face. After movement, the stock will generally retest to the previous breakout region, and I can show you numerous examples where this is happening. Now after the breakout has happened and we can see a confirmation that after the breakout has happened and the retest has happened. What does retest mean? Retest means whenever a stock breaks out from a resistance area, after moving off 2-3 candles, it will again come back to this resistance area to take support, to check the strength of the support. अगर उस स्टॉक को if the stock wants to check the strength of the buyers, it will have a successful retest and again move upwards. मतलब क्या? अगर उस स्टॉक में buyers की strength strong है and तो उसके after a retest, after a successful pullback to the previous resistance area, and the resistance area will now act as a support. वो जो पुराना resistance था वो अब support की तरह act करेगा, ठीक है, और फिर स्टॉक यहां से फिर से upwards जर्नी चालू कर देगा. Simple. Now there was successful retest of that stock, and after confirmation you are entering at around same 1330, 1340. So during this time you should always look for confirmation on smaller time frame during retest. देखो retest के टाइम पे आपको हमेशा hourly time frame में चेक करना है कि retest सक्सेसफुल हुआ है क्या.
Okay, during the during retest, you have to check on the early time frame, has the retest been successful on the smaller time frame. If we see that the retest has been successful on the smaller time frame, then you can enter the rest 30% quantity on that stock and hold the rest 20% for the next adding. Okay, so during retest, what is the total position that we have entered at around 80%, राइट? पहले हमने 50% ऐड किया, फिर बाद में हम 30% ऐड कर रहे हैं. इफ यू आर एग्रेसिव, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो आप यू कैन इवन ऐड द रेस्ट 50% ऑल्सो. मतलब क्या? अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल एग्रेसिव है, मतलब अगर आपकी रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो आप पूरा 50% ऐड करिए, और अगर आप बिगनर हो तो आप 30% ही ऐड करिए ड्यूरिंग रिटेस्ट. Now the retest has happened on the smaller time frame. Now we have bought the rest of the quantity. See, there is again a retest that is happening, but the stock is taking support on the previous area, right? Can you see this? The stock is taking support on the previous resistance area. Okay, तो अगर आपने 50% इधर एंटर किया, 30% इधर एंटर किया, एंड 30% इधर एंटर, रेस्ट 20% इधर एंटर किया, the amount of gain that you would be sitting at is at around 23%. Okay, on the full position. Or if you had only 80% position, still you would be at around 24% position in the similar in BSE. Now this is one example that I have explained where the retest was successful, and this is an old retest. Now I will explain you one more chart. See, during the retest, you have to understand one thing, कि sometimes this is the breakout region, sometimes it may happen that during retest it may go slightly below this and then again move ahead. Okay, this may happen. Why does this happen? Generally this happens when the overall market condition is weak. During this candle, ये जो candle बनी है, can you see this candle where the retest has happened a little bit lower? So this happens when the overall market is weak, and hence it drags all the prices down. Okay, now in ये हमारा एक एग्जांपल देख लिया. अभी हम इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी देखेंगे in the next examples. Okay, the second example on the same strategy that I would be suggesting, that I would be explaining you is CDSL, where one second. Now, can you see a similar type of structure here in this chart? Now, a similar type of structure, a breakout has happened. Breakout region क्या था? 1440 rupees. The breakout is at 1440 rupees. Simple. Now, the price is at around 1416. 1% up. Add 50% quantity here. Now, what will happen? We have added only 50% quantity. Remember, we are following the same rule here also. It is there, it is still there only. अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया. Now the stock has moved up. Now we will have to wait again for the retest of this area, so that we understand this area or this breakout region is successful. Okay, now the breakout has happened with good volumes. Can you see volume spikes also? Same structure. Okay, during sideways zone, you have to look for volume signatures, big volume signatures on the lower side. See this, green candles, these green candles, these green candles. Okay, so these are the signs of institutional buying. That create such kind of structures. Okay, now we are have we finished the retest almost successfully here? Almost we have finished the retest, right? So in this, if you want, if you had already added here, then okay.
if you are there in my close groups, for example in my mentorship groups, you might already know कि we had yesterday only I gave a call on CDSL buying. अगर if you want to have a proof of that, ये देखिए, fresh call, add CDSL only 15%, 50%, and add more on the lower price. See, right? Similar, same thing that we followed. 50% पहले we had already bought it here. हमने इधर profit भी book कर दिया था. अगर if anyone remembers in the Telegram group, I had mentioned कि please exit CDSL and again buy it at around 1480 to 1500 rupees. If you remember, just put it in the chat box. Yes, we remember that. अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, so that you understand कि why exiting a stock is always important rather than entry into that stock, because most of the people fail to book profits here and they again they again have that stock at the same price. One second. Why I am showing here is, ये देखें, it has already happened on CDSL. For swing traders would suggest to book partial profit at current market price 1580 and add more near 1480. और उसके बाद में it was during this candle and then the price has fallen. Why? Because see, 80% of the 80, I will share you one probability that I have observed is, in all my trades 80% of the stock have always retested the previous breakout region. Right? So this provides a safe entry into that stock. Always. The risk to reward is much better during the retest that the stock is giving. And once the retest is confirmed, you can go in full-fledged, you can go aggressively and buy aggressively for the next moves. Okay, so this is an example of breakout has happened, retest has happened, and adding the further quantity here. Now, the rules, ideally rules are, what are the ideal stop loss and target rules that we will look for during such scenario in any kind of stock. One second. In any kind of stock, your stop loss should be the nearest swing that you see. What does the swing means? अगर stock ऐसा move कर रहा है, for example, if the stock is moving like this, okay, and then the stock has moved into consolidation. So during breakout, ideally your stop loss should be this area. Okay, if you see that the range is too big, like 15%, 20%, then you have to look for a smaller consolidation area in this chart. So in BSE, if we look at, can you see that the stock is moving slowly up? So in this chart, what would be the ideal stop loss that we will be looking for is this area. Understood? What is the ideal stop loss? This is the ideal stop loss that we will be keeping that. This is known as a swing low that we can observe into charts. Every chart will have some kind of swings from where it will move up. So in that chart, you should always keep this swing as the stop loss for your trades to be safer side. Okay, now what should be your ideal stop loss and what should be your ideal target? Now for targets, I follow some simple rules. My target for any kind of breakout trades, if I want to hold that trade for only a very short period. What does that mean? Very short period means if I want to hold that period, that stock for only 10 to 15% only. Okay, this is I'm talking about this kind of breakout trading where we are holding that stock only for 10 to 15% and only for 1 to 2 weeks max. So in such trades, your stop loss should be max 7 to 8% only. This should be the maximum stop loss. Okay, your maximum stop loss should be 7%, but on an average, you should have a 5% stop loss for each trade, and target should be 10 to 15%. And then later it can be trailed using moving averages.
Okay, so this is a simple breakout that we have seen, and this is the normal stop loss. The ideally target should be 1:2. अगर आपका stop loss, if you are getting a stop loss at around 7%, 7 to 8%, your target should be at around 18 to 20%. Okay, but try to keep your stop losses below 5%, 5% to 6% only, so that uh, so that you get an ideal risk to reward ratio. See, the for swing trading, I would suggest you to use daily and hourly time frame for your chart, so that you don't have that much noise if that you in a smaller time frame. अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको बहुत ही नॉइज मिलेगी. यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो इट इज आइडियल टू यूज hourly and daily time frame for the best results. And I have observed that daily time frame works the best for swing trading, and this is my personal observation. Our views may be different, so if you find that your result is better on hourly time frame, then you should definitely work on hourly time frame. Or if you find that your result is better on daily time frame, then you should definitely trade on daily time frame in your charts. Okay, so this is the simple stop loss rule. We have seen the target rule. कि target rule should be using ideally should be risk to reward ratio. मतलब क्या, अगर 6% का stop loss है तो 12 से 15% का minimum target रहना चाहिए. After that you can trail your target using you can trail your stop loss using the moving averages. Okay, so these are the two rules we have seen. And okay, entry on lower time frame. See, your entry on lower time frame का मतलब क्या है? See, first 50% quantity where you are entering, first 50% quantity you are entering on this area, right? Now if I play this ahead, we have only 50% quantity, right? To avoid FOMO to avoid any kind of emotional regrets. Okay, your doubt may be, some might think ki, why are we 50%, why are we adding 50% here, and why not add the whole 100% quantity during this area, right? This might be a doubt that everyone might face, ki why are we adding 50% here, rather to have safest entry, add the 100% quantity here only. This is, see, I would suggest my view कि I add the whole 100% quantity during this area only. Why? Because I find कि trading on retest is much easier and much psychologically much easier for me to trade on retest, where I find that the stop loss is in my favor, and I don't have any kind of FOMO after the move has already happened. Okay, so whenever a breakout has happened, I will put that stock in the watch list, and I will add 100% of the quantity on this retest area only. But if we want to trade breakout only, then add 50% here, and rest of the quantity should be added on the successful retest of this area. Okay, now अगर आपको smaller time frame में देखना है, can you see on a smaller time frame a reversal has happened on the smaller time frame on that breakout and retest area? पांच सेकेंड. तो अभी आपको दिख रहा है कि रीटेस्ट हो चुका है इधर. We have got two retests, and then we have got two retests here, and then we have added around 30% quantity in this retest, and we still have 20% left. Okay, so that is not an issue. If we did not buy the whole quantity also, that is not an issue sometimes. But you should always have some defined risk before entering into a trade, and you should know what is the maximum loss that you will be facing that you should be facing when if your stop loss hits. And अगर ऐसा ना हो कि अगर आपने ओवर लेवरेज क्वांटिटी खरीद ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी 1000 रुपए की है और आपने स्टॉक में इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली कि स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका 5000 का नुकसान होगा,
So that is a foolishness that you are trading, and hence that is a thing that you should be avoiding. And definitely आपको ये सब चीजें से दूर रहना है. Don't use leverage and any kind of margin during trading. Okay, see, you can even make money on full cash trading also. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा you need a big amount only to make money. You can start with small and you can try this method in your charts, and if you are finding it useful on your chart, then definitely you should be applying it. The third example that we will be looking for is Birla Soft. Okay, now in this trade, 1 second, I would be solving all your doubts. That is not an issue. Just mute yourself. Okay, just put it in the chat box, and definitely मैं एक से सभी के डाउट वही कवर ही कर रहा हूँ. Now, can you see that the breakout has happened on good volumes? So अगर आप मेरा इस बिरला सॉफ्ट पे कॉल देखोगे, I had shared a call on Birla Soft. See, why I am showing you कि this is already, these are the things that we are already doing it from a very long time, and that is what I have been applying. और ये ऐसा नहीं है कि ये हो चुका है, ठीक है. See, as soon as the breakout has happened on 450, 460 पे 464 पे कॉल डाला था. Fresh buy, current market price 465, add more at 450 rupees. Why 450 rupees? Is 450 is the retest area of that stock, and you should always understand कि stock is see, I would say 80 to 90% of the time the stock will definitely retest. मैं ये गारंटी के साथ देता हूं कि 80 से 90% of the time the stock will definitely retest, and that will provide you the one of the safest entry in any kind of scenario. Okay, now एक और बात है कि इस ब्रेकआउट पे अगर आपने एंटर नहीं किया होगा एट अराउंड 460 रुपीज, तो it will be complete foolishness if you buy that at around this area 490 500 rupees, right? So wait for the retest. Now we can see the retest has almost happened, and if tomorrow also if the market condition is not good, then you just go and watch it out. How does it perform once as the breakout has happened? How does it perform now? You just have to go and look at this chart and observe it. If it is forming a green candle again on this area, if it is forming a small green candle again on this area, then that would be a time where you can enter again, or you could enter fresh, or you can add some more quantity. Okay, now some of the chart that I would be explaining is, अभी आपको ये एक चार्ट दिख रहा है, ये एक आपको चार्ट दिख रहा है. दिस इज अ सिंपल ब्रेक टाटा स्टील का चार्ट. नाउ द स्टॉक टाटा स्टील इज मूविंग इन अ साइडवेज जोन, एंड इट हैज ऑलरेडी, इधर जो ब्रेकआउट हुआ था, सी I would explain this kind of breakout that has happened here. Now, as the breakout has happened, clear cut, the breakout has happened. Now this is a failed breakout scenario. इधर breakout हुआ, आपने क्या करा इधर? You have bought only 50% quantity at this area. Always follow this rule. Now you buy 50% quantity. Now you wait for a successful retest of that area. What does retest mean? Retest means एक breakout के बाद में एक retest के time पे you get a green candle also. Okay, now the stock is falling, and once you get a green candle on this, smaller green candle on this, then only this is a retest that will be called as successful. तो इधर अभी retest हुआ है क्या? No. Follow simple rules you have to follow. Okay, as the retest occurred, no, till now we have, and then, so if you had bought here, you have lost only on 50% of your on your whole quantity, right? You have saved this much kind of amount of money. The loss that you could have got
if you had entered directly whole quantity here, so that always adding into quantities, always adding into branches, tranches बोल सकते हो, हर बार थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खरीदना is always better than buying in a single go, कि एक ही बार में buying the whole 100 shares. Okay, if you wanted to buy 100 shares of Tata Steel, तो पहले ब्रेकआउट पे आपने 50 खरीदे, अगर सक्सेसफुल हो गया रिटेस्ट, फिर 30 खरीद लिया, 30 या 40 खरीद लिया, और if then the price has started to move ahead, then you can buy the rest 10%. Okay, I hope my volume is clear to everyone. Someone is complaining. ओके, नाउ लाइव एग्जांपल मैं एक आपको दिखाता हूं जहां पे आपको सेम ट्रेड लेना है, वेयर बिरला सॉफ्ट का ही एग्जांपल देख लेंगे हम. अभी बिरला सॉफ्ट पे कैन यू सी कि मेरा एक अलर्ट सेट है एट अराउंड 457 रुपीज. सी आई यूज ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल माई चार्टिंग टूल्स. ओके, तो ट्रेडिंग व्यू पे मैं अलर्ट्स यूज करता हूं मेरे चार्टिंग के लिए एंड टू फाइंड एंट्रीज एंड एग्जिट. तो कैन यू सी ऑन माई अलर्ट सिस्टम दैट द बिरला सॉफ्ट पे 457 रुपीज का अलर्ट लगा कर रखा हुआ है. Why? Because this is the resistance area for that stock, and now if I see कि on a smaller time frame, on a daily, on an hourly time frame, if I see that the retest is successful, then I will go and buy this stock. But you might have also asked कि मैंने कल क्यों नहीं खरीदा? Almost the successful has retest has happened, but why didn't I buy that stock? See, during breakouts you have to understand one thing is overall market scenario. Overall market scenario plays a lot of important one of the most important roles during breakout. You might have observed कि during in the November month, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि नवंबर मंथ के मेरे इस महीने में काफी फेल्ड ब्रेकआउट देखे. ओके, और काफी फेल्ड ब्रेकआउट में लॉस भी हुआ है. तो इफ द ओवरऑल मार्केट इज बेरिश और साइडवेज, अगर बेरिश और साइडवेज हो जाता है तो ब्रेकआउट फेलियर्स के चांसेस आर मोर देन 50%. ओके, बेरिश अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो डेफिनेटली आपका ब्रेकआउट बहुत ही सक्सेसफुल होगा एंड यू वुड गेट क्विकर मनी इन अ गुड ट्रेंडिंग मार्केट. बट if we see that if the market the bearishness, you can clearly see the bearishness in the stocks, and so in during this time it is always advisable to reduce your positions and to buy less quantities during the breakouts also and retest also. क्यों, क्या है ना, देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि the strongest of the strongest stocks will fall if the overall market is falling. Okay, and as swing traders, even 10% gain or 10% loss is a big loss if you are doing swing trading or short term trading. Okay, this is not for long. मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ये purely for swing trading ही है, and this is not applied for long term investing or something like that. Okay, तो हम swing trading का perspective से ही बात कर रहे हैं कि during sideways trend or during bearishness a lot of breakouts will fail and a lot of bearishness will be seen, and that is why having smaller positions or having no positions is always better. और आपने देखा भी होगा कि I have been tweeting it from a very long time कि the market breadth is not good and I've been making losses from in this month, and I am currently कल भी मेरे से 2-3 स्टॉक सी Mastic में I had Mastic had broken out of a tight range with good volumes, and I had used my same 21 EMA strategy with जिन्होंने मेरा PDF देखा होगा पहले, तो it had closed above the 21 EMA with good volumes and RSR relative strength positive, and can you see that the breakout has failed and now the volume has increased on the downside. So entering into this stock will be now बोल सकते हो मौत के मुंह में हाथ डालना, similar to like that. Why? Because the bearishness has increased so much and now the overall trend मेरे हिसाब से it will stay now sideways only. Okay, now it is stuck in a zone, and once we see a good breakout happening
and the market condition, overall market breadth has changed, then only it is advisable to buy aggressively in whole quantity. Even now, I am having only few positions that are not even that are not even 20% of my whole portfolio. So almost I have 80% of cash. 80 to 90, 80% cash मेरे पास अभी पड़ी है. Yesterday also I have exited Mastec in loss, and many stocks that I had to exit. Why? Because see, stop loss is one of the main rules that I follow, and everyone has to follow. See, if you don't book loss at 4%, you definitely have to book loss at 10%. अदरवाइज अगर आप 10% पे बुक नहीं करोगे तो हो सकता है आपको 15% पे बुक करना पड़े, बट यू कांट एस्केप दिस साइकिल ऑफ बुकिंग लॉसेस. सो इट इज ऑलवेज बेटर, राइट, टू बुक एट 4% and 5% so that your losses are limited and in control. Once the losses start increasing, you will lose your confidence and you will be not stable emotionally, physically, mentally, and everything will go haywire. आपको सभी चीजें घटिया लगने लग जाएंगी, आपको ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, आपको बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, आपको चार्ट देखने का मन नहीं करेगा, आपको नफरत होने लग जाएंगी कि क्यों मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्यों मैं इस फील्ड में आया. ओके, दीज आर द थिंग्स दैट एवरीवन फेसेस एंड दिस इज नॉर्मल. ओके, जस्ट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल दिस. ओके, आपको ये चीजें समझने आनी चाहिए कि ये सब चीजें, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, दीज आर नॉर्मल्स. व्हेनेवर मार्केट कंडीशन खराब होने पर ब्रेकआउट के फेलियर्स बहुत हो जाते हैं, तो आपको इन कंडीशंस को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा. तो ब्रेकआउट फेलियर कम करने के लिए, बड़ा लॉस कम करने के लिए पोजीशन को आपको कम करना पड़ेगा, आपकी पोजीशन साइजिंग को कम करना पड़ेगा. मतलब क्या, अगर आप पहले 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक खरीदते थे, तो इस बार आपको बस 50,000 का खरीदना चाहिए और क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, ताकि लॉस हो तो कम ही हो, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कम प्रॉफिट हो रहा है तो चलेगा, बट लॉसेस नहीं होने चाहिए. क्योंकि मेन पर्पस क्या है हमारा? मेन पर्पस इज प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल, प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल, प्रेजर्वेशन ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, या अगर ऐसा होता है कि अगर आपका सिमिलरली देखो, अगर आपका समझो आपका स्टॉक, आपने कोई स्टॉक इधर खरीदा है एंड आपका एसएल था दिस एरिया, फॉर एग्जांपल अराउंड अराउंड 6%, एंड आफ्टर द ब्रेकआउट हैज हैपेंड, समटाइम्स इट मे हैपन कि द स्टॉक विल मूव अ लिटिल बिट साइडवेज. Okay, if the stock moves sideways also, that is not an issue. Unless and until your stop loss is getting hit, it is not advisable to exit from the trade. And if ऐसा हो अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा साइडवेज चल रहा है, तो then you may think of exiting the trade, but at least give some time for that stock so that it has some kind of time to move up and again gain that momentum that it has lost. Okay, so you should always have some predefined targets, predefined stop losses, and trail your stop losses. Okay, now one more rule that you can use is to filter out more kind of stock is always buy breakout that is happening above the 21 exponential moving average. Okay, always buy breakouts that are happening above the 21 exponential moving average. Why? Because a stock that is above the 21 EMA is considered to be strong and is considered to be trending. Okay, I mean the trend of 21 EMA should be upwards. Okay, ऐसा नहीं हो कि 21 EMA ऐसा साइडवेज हो और इधर का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, ऐसा नहीं हो कि 21 EMA ऐसा चल रहा हो और फिर आपने स्टॉक का ब्रेकआउट खरीद लिया इधर. नो, योर ब्रेकआउट, आपके कुछ रूल्स रहने चाहिए कि ब्रेकआउट शुड बी ऑलवेज ट्रेडेड इन एन अपट्रेंड, बिकॉज if you are trading a breakout in an uptrend, that means that you are there with the longer term trend of that stock, and that will help you to stay in the trend. Simply एक एग्जांपल से बताऊं कि ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है. I would ask everyone a question. This is a road where cars are moving from here and some cars are moving from here. Okay, now simple, left,
नाउ अगर आपको if you want to move from here to here, okay, so it is, and this is road A and this is road B. So what it is advised, to go from road A or to go from road B? Just put it in the chat box. अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है तो आप कौन सा रोड चूज करोगे? Will you choose road A or road B? Why are you choosing road A and not road B? If I want to choose road B, what is the problem? What kind of problems will I face if I choose the road B in my trading or during traveling? ओके, सिंपल एक सिंपल मैं आपको बताता हूं कि रोड बी लेने पर आपको क्या क्या होगा. एक तो प्रॉब्लम ये है कि सभी गाड़ियां इधर से आ रही है तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी. यू विल फेस प्रॉब्लम मूविंग अहेड. सेकेंड थिंग इज द पुलिसमैन विल catch you and he will fine you. Second problem. Third problem is you will be causing a lot of traffic jam and you will be creating problems on the road. Similarly, whenever a stock is in downtrend and you are trying to buy that stock, what you are doing is स्टॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है और आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? आप एक तो आपके यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ, there is obstacles that are present here. What are the obstacles that you can see? Obstacles are nothing but resistance areas. Second thing is you will face lot of problems from sellers that are present here. That means the policeman will fine you for trading into the wrong trend. Fine मतलब क्या? You will face losses. Okay, हो सकता है आपको. That is why it is always advisable to trade in the direction of the trend, and all trading breakouts in an uptrend. Trading breakouts in an uptrend is always far more profitable and higher win ratio compared to the breakouts that are happening in a downtrend. What does that mean? कि breakout happening in a downtrend, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा. नाउ ये एक चार्ट है ऑरो फार्मा का. Stock is in clear downtrend. If I make one second, if I make one consolidation area, इसका मैं बनाता हूं. Okay, for example, if I make this, नहीं ये एक ढंग का एग्जांपल है क्या? One second, एक I will choose a better chart. One second now. Yeah, ये एक है good example where the breakout has happened. Now can you see that the stock is in downtrend? So if we see that, how to understand that downtrend? See, आपको clearly दिख रहा है कि stock नीचे आ रहा है and making lower high lower low. Okay, आपको समझ में आया कि the stock is making lower high lower low. Now during this, if you trade breakouts that are happening in a lower high lower low structure, what will happen? You will find resistance areas, multiple resistance area from where the price will fall. This is a resistance area, this is a resistance area, this is a resistance area. So in such kind of structure you will face a lot of problem. Why? Because the stock will struggle to move upwards and it will always fall whenever it will touch. One more example where most of the people are stuck is Amar Raja Battery, where breakout has failed. Can you see the stock was trying to break out from this area, but the stock is in downtrend and it was stuck in a range, and then it was trying to break out, and how the breakout is not successful and has finally broke down. So the probability of profits, the probability of win increases when you trade breakout in an uptrend. And see, अगर आपको breakdown play करना है, if you want to short sell a stock, if you want to short a stock,
then definitely look for a stock that is in a sideways क्या जो lower high lower low structure में है. Okay, so I would keep this alert to short the stock, and I would suggest my clients to short this during at around 680 rupees. Okay, so this is a time that this is a structure that you should be avoiding. And what kind of structure that you should be trading? This. Can you see whenever a breakout is happening, how quickly, how swiftly it is moving? ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कितना effectively breakout में ये move करता है. See, breakout has happened. Breakout moved in an uptrend. Okay, always look for breakout in an uptrend where the breakout is happening above the 21 EMA and the 21 EMA is above the in an uptrending in a trending zone. Okay, so I would now, it is 3 PM right now, so I would, अगर किसको भी जो भी doubts है, just raise your hands. Raise your hands. You can raise your hand in Google Meet. I would ask doubt one by one so that we don't have lot of disturbance. Okay, I would ask the person to unmute and then you can unmute and ask. Okay, now Gagan ji, please ask the doubt. सर मैं आपको टेलीग्राम में फॉलो करता हूँ सर. मेरा ये डाउट है, अभी नेक्स्ट वीक अभी मार्केट में बहुत पैनिक सिचुएशन चल रहा है. अभी नेक्स्ट वीक में कुछ भी एक आप कौन सा भी एक लाइव स्टॉक को पिक करिए, उसी की चार्ट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके हमको क्लियर आइडिया दे सकते हैं कि ये चार्ट का पोजीशन अभी ये है, अभी आगे जाके ये होने वाला है, तो ताकि हमको इजी समझ में आए. ये मेरा क्वेश्चन था सर. ओके, तो इसलिए मैंने पहला एग्जांपल बिरला सॉफ्ट का दिया ना कि ये एक लाइव एग्जांपल है जहां पे हमने ब्रेकआउट देखा. मैंने कॉल भी डाला ब्रेकआउट का, मैंने रिटेस्ट एरिया का प्राइस भी डाला हुआ है. तो आपको एक आई वुड शेयर 1 or 2 more एग्जांपल्स इन द लाइव. ओके, श्योर, आई वुड कीप दैट इन माइंड. मैं अगले हफ्ते और शेयर करता हूं इस पे. थैंक यू सर. थैंक यू. नाउ आई वुड आस्क, नहीं अब वी हैवंट फिनिश द सेशन कंप्लीटली. अब हमारा थोड़ा और बहुत बाकी है. मनीष जी, यस, आस्क द डाउट. सर गुड आफ्टरनून सर. दिस इज द कॉल रिगार्डिंग सर, आपने एक स्टॉप लॉस बताया सर. जैसे ही आपने एक स्टॉक को ब्रेकआउट रीजन के 3% के ऊपर 2 to 3% के ऊपर आपने खरीदा है. सो द स्टॉक विल नहीं यार, इट इज नॉट लाइक कि आपको ब्रेकआउट के 2-3% ऊपर खरीदना है. आपको कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम आपको 2-3% ऊपर खरीदना है, उससे ज्यादा नहीं. ट्राई टू बाय एग्जैक्टली एट द ब्रेकआउट एरिया ओनली. First point is that. Yeah, okay sir, the stock is also above the 21 EMA. That is also the primary criteria. सर समझो सर, सडनली कुछ मार्केट में कुछ गड़बड़ हुआ, सम पॉलिटिकल रीजन और कुछ हुआ, सडनली आपने जो बताया कुछ 6% मैंने स्टॉप लॉस रखा. सडनली एक ही दिन में अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस समय मैं एग्जिट करना चाहूंगा, एग्जिट करना चाहिए या फिर 1-2 दिन अभी? Okay, definitely. This is a good idea, good question ki whether should we exit the stock on the same day if the stop loss hit. I would suggest ki definitely you have to exit the stock on the same day if your stop loss gets hit on the same day. Why? Because if you see if a breakout failure has happened and देखो stop loss hit हुआ मतलब क्या है कि breakout fail हो गया, और breakout fail का मतलब क्या है कि the stock may continue to be in a sideways zone or may fall from that area. Simple. So that is not advisable to use to change your stop loss even if it hits on the even if it hits on the same day, so as to manage the risk. Your risk should be managed and it should not exit greater than 6%. क्योंकि क्या पता, do you have the guarantee कि that the stock can't fall next day 6% or 5% again? No, we don't know. See, अगर अगले दिन रिकवरी होती है तो we can enter again, but अगले दिन अगर 6% का और लॉस होता है, is that loss bearable to us? No, sir. That is why your ideal stop loss should be maximum 6% from your buying area, and
keep keep your buying area as close as possible to the breakout area, so that your stop loss will be मतलब आपको थोड़ा सा स्टॉक को मूव करने का रूम मिल जाएगा, एंड इट कैन मूव थोड़ा लिटिल बिट फ्रीली. थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है स्टॉप लॉस, आई मीन थोड़ा बहुत स्टॉक ब्रेकआउट के नीचे भी आ जाता है इन केस, तो आपका बाइंग एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे है, एंड हेंस इट कैन सेव यू. तो थोड़ा बहुत उसको वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, एंड दैट इज द टाइम वेयर यू कैन गेट सेव्ड. Okay. So for retest, sir, I have to check in the hourly time frame. Yeah, For you can breakout, I check have it to on the check in hourly daily. time frame also, or on daily time frame also. The whichever suits you best. But I think in use hourly hourly time and frame, I daily. think It depends upon the stock to stock. But आपको हमेशा अलर्ट से ही एंट्री और एग्जिट लेनी है. okay, sir. So Thank that, you, sir. हाँ. Thank you, sir. Now one second. Next person, Sivaji. Yes. Yeah, hi Jay, how are you? Yeah, I'm fine. Yeah, I have two questions. One is what is higher high and higher lows? Okay. And second thing is how can we keep alerts in TradingView? Okay. See, first question is whenever this, see, higher high higher low का मतलब क्या है कि स्टॉक हमेशा पुल बैक्स में मूव करता है. Okay, the stock is always moving in pullbacks. Now, can you see that every time it is making a pulling back, it is making a lower higher high. मतलब क्या, पहला लो ये था, first it made this low and this high, right? Second time, Yes. 1 second, it made this high and this low. मतलब क्या, higher high and higher low. Third time it made higher high and higher low. Similarly, lower high lower low कैसा दिखेगा, ऐसा In downtrend. डाउन ट्रेंड. तो जब भी आपको हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिखता है तो मतलब क्या है, इट इज एन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में कभी भी आपको एच 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 एल स्ट्रक्चर दिखेगा, डाउन ट्रेंड में आपको कभी भी एच एल 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 स्ट्रक्चर दिखेगा, लोअर हाई लोअर लो. ओके. सेकेंड थिंग इज यू कैन कीप अलर्ट्स इन ट्रेडिंग व्यू. सी, ट्रेडिंग व्यू का पेड फ्री प्लेटफॉर्म में आप 2 ही अलर्ट रख सकते हो फ्री फॉर कीपिंग alerts in TradingView. For more than 2 you need premium version. तो सिंपल मैं बता दूं कि कैसे रख सकते हैं, बस मैं वो बताता हूं आपको. फॉर एग्जांपल दिस इज द, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं. ओके, नाउ दिस इज द, आई कैन सी द ब्रेकआउट हैज हैपेंड. नाउ दिस इज द रीटेस्ट एरिया फॉर दैट स्टॉक. तो मैं इधर क्लिक करता हूं हमेशा कोई भी चार्ट में और ऐड अलर्ट करके सिलेक्ट कर देता हूं. ओके, एंड क्रिएट अलर्ट. सो इफ the price touches 459.2 rupees or whatever the price is, my system will start beeping, or my phone, I will get notification, and if my TradingView is on, then the TradingView platform will start vibrating ki the alert has gone. Okay, so this is a paid, you will find that in the paid version only, and it is not available for more than 2, I think 2 or 3 alerts are available in the free. I use paid version for my trading, and you can see, can you see that all my alerts are kept? Yes. I can in my version, in my premium version, I am using I have 20 alerts system. So can you see all my alerts are there, and you will also find ki all my alerts are mostly on which area, which is this area for this stock. 733. हाँ, नहीं एरिया मतलब ब्रेकआउट के बाद में तो रिटेस्ट. या रिटेस्ट. ओके, अभी आप देखना जितने भी स्टॉक रहेंगे मोस्टली सभी के मेरे रिटेस्ट के एरिया के चार्ट है. 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड, ये हाँ, ये देखिए एक्यूरेसी, नितिन स्पिनर्स, दीपक नाइट्राइट इस तो दूसरा चार्ट है, इसको भी हटा देते हैं. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस की व्हाई आर वी. ये देखिए स्पैल तो कौन सा स्टॉक है, केएनआर कंस्ट्रक्शन, तो ऊपर का. ओके, यस्टरडेज मार्केट, कल की मार्केट गिरने के कारण काफी सारे स्ट्रक्चर बदल गए, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आई हैव टू मॉडिफाई दिस अलर्ट सिस्टम अगेन टू check what should be the ideal buying area. So you should be always active and
Yeah, I will ask the next doubt. One second. Manoj ji, please ask. Please lower your hand and unmute and ask your doubt. Okay. Dr. Rajiv ji. Sir, what is your view on small cap for next 2 months? Okay. एक स्मॉल कैप पे मैं आपको, मुझे लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स विल नाउ ओनली बी साइडवेज बिकॉज आई डोंट सी, वन सेकंड मैं चार्ट में ही दिखाता हूँ. ये हमारा एक रिटेस्ट एरिया है पुराना वाला, जहां पे हमने सक्सेसफुल रिटेस्ट किया भी है. आई थिंक वी मे बी स्टक इनटू दिस रेंज ऑफ, ये एक बड़ी रेंज में हम फंसे रहेंगे थोड़ा टाइम, बिकॉज कंसोलिडेशन हैज नॉट हैपेंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? सो that consolidation period is also important for trading and in the stock market cycle. So I think this is the area that we would be stuck in mostly, and one may think of buying at this low area and selling on this high area. Okay, this could be an opportunity, but let's see what happens. Let's see how it goes in the coming days, and if we see successful reversal, then it will be confirmed that we will be stuck in this range. Like Nifty will be stuck in a range of this area. मुझे लगता है निफ्टी भी ये एरिया में स्टक रहेगा, अराउंड 1000 नहीं 600 पॉइंट्स की रेंज. ओके, सो दिस इज माय व्यू. Okay. Okay. Any other doubt? Priyanshu ji, Manish ji. सर गुड आफ्टरनून सर. या गुड आफ्टरनून. दिस इज मनीष सर. हाँ सर मेरा 2 डाउट है. एक तो बिरला सॉफ्ट का जो आपने बताया ना सर, हाँ बिरला सॉफ्ट में अभी जो लेटेस्ट वॉल्यूम बना सर कल का, हाँ वो वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से हाई है सर. हाँ. उसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? सी, देखा जाए तो दिस लुक्स कंप्लीटली बेरिश वॉल्यूम. ओके, फर्स्ट थिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ द मार्केट, देखो कल क्या हुआ था, मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं आपको. एक आर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक ऊपर तो भागा था, अच्छे वॉल्यूम्स में भागा भी था. एक आर्ली की जगह अब हम इसको और थोड़ा डीपली 15 मिनट पे देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है. द स्टॉक मूव्ड ऑन बिगर वॉल्यूम्स अपसाइड, ऊपर की साइड में थोड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ ही गया, और जब नीचे स्टॉक प्राइस गिरा तब थोड़े वॉल्यूम्स कम हो गए. तो मैं ऐसा, this is what I interpret is this volume that has happened was mostly created by buyers and was created on the longer side only. Okay, and we can see this bigger volume or a red candle bar because the stock price closed lower and overall there was bearishness into the market. So this is what I would first conclude from this. Now अगर ऐसा नहीं होता है कि कल भी अगर रिवर्सल नहीं आता है और स्टॉक अगेन फेल्स टू मूव अप और इट फॉल्स डाउन, इट ब्रेक्स दिस एरिया, देन दिस इज कंफर्म्ड breakout failure again. Otherwise, if we see small green candle, then we may confirm कि the breakout is a successful breakout and then we may head higher. सर इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा सर? अभी आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए आइडियली. मैं इस केस में स्टॉप लॉस शुड नॉट बी दिस एरिया, बट I would suggest it be the low of this candle. Okay, so low of the big green candle. This breakout candle. Because if we keep this as a stop loss, then you would die. इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो मर ही जाओगे ना. तो ये स्टॉप लॉस ये आपका एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से. Otherwise, there is no other kind of stop loss that you can keep in this chart right now. Yes sir. है ना. एक तो यही ऑप्शन है या फिर एक ये दूसरा ऑप्शन है, और कुछ नहीं है. सर एक और डाउट है मेरा. मैंने जो बिरला सॉफ्ट में ट्रेड लिया था सर, मैंने जो बाई किया था 436 पे बाई किया सर मैंने. बिकॉज उस दिन जो बिग ग्रीन कैंडल से पहले का जो दिन है ना सर, उस दिन मैंने क्लोजिंग के टाइम में बाई किया, बिकॉज उस दिन वॉल्यूम रेज हो रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि ब्रेकआउट होगा वो एक्सपेक्टेड था सर. तो उस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया. तो क्या ये सही अप्रोच है या ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं ट्रेड लेना चाहिए? देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट के पहले ट्रेड नहीं ले सकते हो. देखो व्हाट यू आर डूइंग इज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो सिंपल ये चीज जो आप कर रहे हो वो मैं भी करता हूँ. जब ब्रेकआउट होता है
डोंट यू थिंक कि ये ब्रेकआउट हो रहा है तो सभी को, पूरी दुनिया को पता है? तो आइडियली जो चीज सबको पता है वो चीज जनरली होती ही नहीं है। मतलब Yes, क्या sir. है, अभी इधर ब्रेकआउट हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑल माइट हैव एंटर्ड हियर। सो ये पोजीशन ऑलमोस्ट सबकी एक्टिव होगी जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। आई कैन गारंटी कि मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु ट्रेड ब्रेकआउट माइट हैव एंटर्ड हियर ऑन द ब्रेकआउट एरिया। बट टू you have to do some things you have to do in stock market which no one else does, so that you can gain that kind of money which no one else is getting similar। आपको अगर जो चीज सब लोग कर रहे हैं वही करोगे तो जो लोगों को चीजें मिल रही है आपको भी वही मिलने वाली, मतलब पैसों में। तो Yes. आप जो कर रहे हो, जो एंटिसिपेट कर रहे हो ब्रेकआउट, दैट इज नॉट एन इशू। बट यू विल फाइंड अगर आपने इधर भी एंटिसिपेट किया होता तो आई मीन दिस इज ऑल्सो, Yes, sir. ये भी आपने इधर भी एक वॉल्यूम कैंडल है, सिमिलर चार्ट है, इट इज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल्स एंड वॉल्यूम बर्स्ट है, बड़ा कैंडल है कि नहीं? सिमिलर, Yes, sir. सेम थिंग हैज हैपेंड। बट Yes, sir. आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड? Yes, sir. It came down. ऊपर गया, एक कैंडल बनाया, डोजी बनाया, नीचे आ गया। Yes, sir. So in such scenario, what you can do is, if you are anticipating a breakout, simple, add 50% before a breakout, add the rest 30% on the breakout, and add the rest on the retest of the breakout. Simple criteria of trading. Always after confirmation add the full quantity। अगर आपके पास confirmation नहीं है तो थोड़ी quantity के साथ enter करो, बाकी की quantity कब enter करो? जब confirmation मिल जाए, Yes, sir. है ना? ये समझ Yes, में आया sir. आपको? यस सर। सर एक और डाउट था सर, ये कार्बो रैंडम यूनिवर्सल पे आपका व्यू क्या है सर? वो भी लाइक ब्रेकआउट होने वाला था तो कार्बो रैंडम मैंने यूनिवर्सल तो मैं कब से ही बुलिश हूं, और मैंने Yes, इस sir. पे शेयर ट्रेड भी शेयर की है, काफी चीजें अच्छी है स्टॉक की। और देखो देख रहे हो कि एट द एंड ऑफ द डे इट हैज कंप्लीटली रिकवर्ड ऑलमोस्ट 1%। 1% गिरना इज अ नॉर्मल थिंग, ओके, इसको आप नहीं बोल सकते कि गिरा है। और Yes, sir. है ना, ये एक बढ़िया स्ट्रक्चर में है, और ये मेरे को लग रहा है कि ब्रेकआउट देगा, क्योंकि when the whole index and everything is falling more than 1.2%, it is still showing the strength and not falling, unlike others जो आपको मैं मिड कैप स्टॉक में दिखाऊंगा। देखो 5%, 4%, ठीक है। इधर गिने चुने कितने स्टॉक है जो ऊपर भाग, ये इसको छोड़ के गिने चुने स्टॉक है जो पॉजिटिव में भी है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड स्टॉक where it shows high relative strength and it is having high strength, okay। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? आई वुड Yes, sir. सजेस्ट टू यू टू कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 21 EMA। देखो Below अब 21. क्यों ऐसा, ये देख रहे हो मेरा फिफ्थ बाय इधर Yes, sir. है ना? मैंने ये चार्ट भी डाला था पहले, और आई एम Yes, sir. स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक, ओके। तो ये Yes, sir. बाय इधर क्यों है? कैन यू सी दिस स्मॉल ब्रेकआउट ऑफ दिस स्मॉल रेंज? देखो Yes, sir. हर कभी भी आपको कोई भी बड़े ब्रेकआउट का, मैं देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्रेकआउट दैट वी कैन ट्रेड, सो वी कांट कवर एवरीथिंग। तो ये एक छोटी रेंज का ब्रेकआउट है जो मैंने ब्रेकआउट के पहले ही ऐड किया था, एंड क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव था, एंड आई कुड सी कि देयर वाज अ गुड क्लोज अबव द 21 EMA on this candle, and hence I added again here, and then the breakout has happened. I am still holding, but I am only having half the quantity. Yes, sir. Why? Because market breadth is not that good, और इतना, और अभी मेरे पास आधी क्वांटिटी है। when can I add the whole full quantity? When this breakout happens, right? Yes, sir. When the major breakout happens, first मैंने एक छोटा सा breakout में ऐड किया on a smaller Yes. tight range, then I will add the other quantities on the bigger breakout of this whole base। Okay, sir. Okay, sir. ऐसे आपको प्रोग्रेसिवली क्वांटिटीज ऐड करनी चाहिए कोई भी स्टॉक में। सी दिस नॉट ओनली फॉर माय स्ट्रेटेजी, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, यू ऑलवेज हैव टू ऐड क्वांटिटीज इन प्रोग्रेशन। एक ही बार में बड़ा पोजीशन लोगे तो ऐसा हो सकता है कि बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने पर बड़ा लॉस हो, ठीक है। Yes, sir. तो बेटर है कि ऑलवेज ऐड सम 30%, 40%, लाइक एक रूल बना लो आप। दिस कुड बी रूल अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस, कि पहले इसमें मैं 40% ऐड करूंगा, फिर 30% ऐड करूंगा, फिर 30% ऐड करूंगा, अदरवाइज 50, 30, 20, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू फॉलो। Okay, sir. ऐसा एक सिस्टम बना लो, तो
ऐसा नहीं कि आपने और सिस्टम बना लिया है तो सिस्टम को फॉलो करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक में पहले 40% ऐड कर रहे हो, फिर कोई स्टॉक में 50% ऐड कर रहे हो, कोई स्टॉक में 10% ऐड कर रहे हो, तो दिस इज नॉट सिस्टम। ये तो आप आपकी मर्जी से ऐड कर रहे हो। तो एक रूल्स होने चाहिए आपके कि 40-30-30 वर्क्स गुड और 50-30-20 वर्क्स गुड। जस्ट चेक इट आउट अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि क्या आपको ज्यादा बेटर है। तो आई जनरली ऐड फुल क्वांटिटी ऑन रिटेस्ट, एंड अगर मुझे करना है तो मैं जनरली ब्रेकआउट में, देखो मैं क्या फॉलो करता हूं मैं वो बताता हूं, ठीक है। मैं ब्रेकआउट के टाइम पे आई ऐड ओनली 20-30% मैक्स। ये बहुत हो गया, 20% भी हो गया बहुत। मैं और रीटेस्ट में आई ऐड द होल 80% रेस्ट कंप्लीटली। ओके, सो दिस व्हाई, बिकॉज आई फाइंड मुझे लगता है कि रीटेस्ट मेरे लिए ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ब्रेकआउट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अपॉन योर ओन ट्रेडिंग स्टाइल की विच सूट्स यू बेटर। सब में ऐड फुल क्वांटिटी, देखो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग 80% क्वांटिटी ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं और 20% रिटेस्ट पे ऐड करते हैं। एम आई सेइंग कि दिस इज रॉन्ग? हैव आई सेड कि दिस इज रॉन्ग? No, No, sir. it is not. It is not wrong. It only depends how you manage the risk and how it is your trading style, and if you can manage that kind of risk, तो बहुत ही बढ़िया है। And some people might have even add 100% directly on the breakout, but 50-30 works good as a beginner, and then you can change your style depending on that. Okay. सर दिस थिंग आई विल फॉलो, बिकॉज सर अभी तक मेरा अप्रोच रहता था कि ठीक है अगर मेरे को शेयर अच्छा लगता है तो मैं फुल परचेज करता था, बट आपको बताने के बाद मैं डेफिनेटली मैं इसको इम्प्रूव करूंगा सर। Sure, एक definitely. एक चीज और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा सर रिगार्डिंग स्टॉप लॉस सर। जैसे हाँ, मैंने एक शेयर खरीदा था मोतीलाल ओसवाल सर। हाँ, मोतीलाल ओसवाल मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है 909 रखा था सर। मतलब मेरे पास ये बाइंग प्राइस 823 था, बट मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया और 21 ईएमए के नीचे ही मैंने 909 एसएल रखा था, पर वो हिट करने के बाद में सर दोबारा 930 पे वो क्लोज हो गया सर। तो मेरे से क्या गलती हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ। आपसे कुछ भी गलती नहीं हुआ है। मैं बताऊं क्यों? यस क्योंकि सर। ये स्टॉक, मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। ये देख रहे हो यस सर। क्या लिखा हुआ है? एग्जिट। यस सर। सिंपल, कुछ यस सर। गलती नहीं है। देखो हमारा रूल क्या था, ब्रेकआउट हुआ, इधर ब्रेकआउट पे मेरी भी एंट्री थी, मतलब मेरी यस एंट्री नहीं थी, मेरी इस कैंडल पे एंट्री थी, रीटेस्ट के कैंडल पे। यस और सर। ये देखो क्यों, सेम क्राइटेरिया, टाइट रेंज में है, एक टाइट रेंज का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट बॉडी कैंडल पे आया, वॉल्यूम बड़ी, सेम, ऑल द थिंग्स आर मैचिंग। नाउ अबाउट 21 ईएमए, स्टॉक वाज मेकिंग हायर हाई हायर लो, कैन यू सी? इधर ट्रेंड चेंज हो गया है, हायर हाई हायर लो। नाउ यस सर। इधर यस मैंने सर। इधर मैंने एंट्री नहीं ली, आई हैव एंटर्ड हियर, स्टॉक मूव्ड अप, ब्रेकआउट फेल्ड, व्हाई? मार्केट भी गिरा। तो देखो ब्रेकआउट फेलियर के इज इट इन योर हैंड्स और इज इट इन माय हैंड्स? नो किसी के सर। भी हाथ में नहीं है ये। यस सर। ब्रेकआउट फेलियर यू विल नेवर नो कि ब्रेकआउट इज गोइंग टू फेल। यस सर। ब्रेकआउट फेल होने के बाद में पता चलता है कि ब्रेकआउट फेल हुआ है। यस सर। समझ में आया आपको? ये दोनों में अंतर समझो। ब्रेकआउट फेल होने से पहले ही पता चल जाता कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है, तो सभी लोग निकल जाते हैं ना। यस सर। जब बायर्स की स्ट्रेंथ अपने आप कम हो गई इसलिए ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये बाद में पता चलता कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है। यस सर। दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम एंड नो वन कैन अवॉइड इट, सिंपल। और मैंने यस भी सर। खुद एग्जिट किया इसमें से, ये देखिए, यस मोतीलाल एग्जिट, आईआरसीटीसी कैन एवरेज, वीएलएस एग्जिट, सोना कॉम्स होल्ड। अब देखो, अब हम देखेंगे कि क्यों आईआरसीटीसी होल्ड करके या एवरेज करके लिखा हुआ है। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो आई हाउ मच रेस्पेक्ट आई हैव फॉर द 21 ईएमए। यस सर। सिंपल रूल्स, ज्यादा, जस्ट हैव सम सिंपल रूल्स फॉर योर ट्रेडिंग एडेड। देखो, और अगर आप आईआरसीटी किसी का चार्ट भी देखोगे, जब मेरा रिकमेंडेशन देखोगे मेरे मेंबर्स को, सीएमपी 916, और ये तो मैंने फ्री ग्रुप में शेयर किया था। ओके, ये तो फ्री ग्रुप का कॉल था जो मैंने सभी के साथ शेयर किया था। स्टॉप लॉस एड नियर 700, स्टॉप लॉस 700, ओके सॉरी, स्विंग ट्रेडर स्टॉप लॉस 830 रुपीज। ये मेरा नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए दिया था, 830 रुपीज। ओके, सो
21 EMA के सपोर्ट पे एवरेज करने को बोल दिया है और हमने कहाँ खरीदा था 900 के आसपास। तो यू हैव टू फॉलो सिंपल रूल्स कि पहले हमने कुछ स्टॉक का क्वांटिटी खरीदा, फिर ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट पे वापस से कुछ खरीदा, और अगर स्टॉक हमारे साइड क्या नाम है हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ में मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग along with our expectation कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसे मूव करने का, then only you should always add more quantities ahead and ahead, और आपको हमेशा मौका मिलेगा, you always get pullbacks to add the rest quantities। so ऐसा नहीं है कि स्टॉक रॉकेट बन के ऊपर जाएगा, और अगर रॉकेट बन के ऊपर गया है तो रॉकेट बन के नीचे भी आएगा, क्योंकि रॉकेट जब फटता है तब अपने आप जमीन के नीचे क्या पानी में जाकर ही रुकता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि रॉकेट फटने पर पानी में ही डूबेगा वो, तो ऐसा ही होता है जनरली। तो रॉकेट जैसा जाएगा तो रॉकेट जैसा गिरेगा, ट्रेन जैसा जाएगा तो ट्रेन जैसा ही गिरेगा, ट्रेन जैसा ऊपर जाएगा तो ट्रेन जैसा ही नीचे आएगा। तो बेटर है कि आराम आराम से जाने दो, तो आराम आराम से नीचे आएगा। थैंक यू सर, इट वाज ए नाइस इंटरेक्शन, काफी कुछ मेरे को सीखने को मिला सर आज। थैंक यू वेरी मच सर। आई वुड आस्क other people doubts now. I mean, next doubt is of Priyanshu ji. सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट है सर, जैसे ब्रेकआउट हुआ, हाँ फिर रीटेस्ट आया, हाँ फिर रीटेस्ट के बाद कई बार शेयर कंसोलिडेशन में चल जाता है वापस हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो सर या उसका क्या करना है? see during that time, that is the time, देखो मैं उस टाइम पे क्या करना है मैं ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन के पीरियड में आपका पेशेंस लूज हो जाए और आपने Yes, sir. जैसी एग्जिट किया उसका ब्रेकआउट आ जाए। हाँ सर, हुआ वन है। थिंग ये होता है, या फिर आपका पेशेंस लूज नहीं हुआ और वो स्टॉक का ब्रेकआउट भी नहीं आया। तो ये आपको स्टॉक टू स्टॉक चेक करना पड़ेगा वॉल्यूम्स के साथ में कि कैसा मूव कर रहा है, मूविंग एवरेजेस कैसे हिल रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज के आने के बाद में उसमें वॉल्यूम पिकअप आ रहा है तो यू कैन होल्ड। अगर कंसोलिडेशन में चला गया है, अगर वो दिख रहा है कि कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा है तो निकलना बेटर है, और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे वापस से एंटर करना, this could be a other idea. See, during this time, everyone will have some different kind of psychology कि कुछ लोगों के पास पेशेंस ज्यादा रहता है तो वो होल्ड करके रख लेते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, so I think they might not hold that during that time. So you have to understand from stock to stock how it is performing, उसका पास का प्राइस एक्शन कैसा था। अगर प्राइस में वो ट्रेंडिंग था और एकदम से कंसोलिडेट हो गया है तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट ट्रेंड के लिए कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, क्योंकि समटाइम्स कंसोलिडेशन इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट। एक मैं सिंपल बताता हूं, ये देखो मैं बिरला सॉफ्ट की एग्जांपल ले रहा हूं, सो दैट बिरला सॉफ्ट इट इज अ रीसेंट एग्जांपल, राइट, इसलिए मैं ले रहा हूं। देख रहे हो कि ब्रेकआउट हैपेंड, आपने ब्रेकआउट की रीटेस्ट में खरीदा, कंसोलिडेशन में अटक गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, कैन यू सी, एक ब्रेकआउट हुआ फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, फिर क्या होगा इधर कंसोलिडेशन एक एरिया में। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस, अब क्या होगा, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। तो कंसोलिडेशन इज लाइक इट इज ओनली, देखो एक बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले की गरजने की, वो क्या है डायलॉग है, तूफान आने से पहले की शांति। हाँ, तूफान आने से पहले की शांति। तो ऐसा समझ लो कि तूफान आने से कंसोलिडेशन इज लाइक अ शांति पीरियड ऑफ दैट तूफान। और ये देख रहे हो कि ये पैटर्न रिपीटेड पैटर्न है, रिपीटिशन में चल रहा है, ठीक है। इसके पहले हम देखेंगे कहां पे ऐसा एक हुआ था, इधर एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, मतलब नॉट दैट ग्रेट बट ठीक है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू योर ओन होल्डिंग पीरियड। अगर आपकी होल्डिंग पीरियड ज्यादा नहीं है तो निकल जाना, अगर होल्डिंग पीरियड है, रख सकते हो, पेशेंस है, तो डेफिनेटली देन यू शुड होल्ड, या शेकिंग आउट वीक हैंड्स बोल सकते हो। सर एक बार टीसीएस को देख लीजिए। See, I would not ask do stock specific. I would ask now other person. Sorry, huh? Okay. No. Ronak ji and Suraj ji. Yes sir. Good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon. सर मेरा एक मैं मतलब वेडनेसडे को एक आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियरली। हेलो सर, जस्ट पुट, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए शायद। एक मिनट। ओके, रौनक जी, मेरा हाँ
हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर, वेडनेसडे को वेल कॉर्प ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बाद में थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा क्रैश हो गया, इसलिए नीचे आ गया। तो फिर आपका उस पे क्या व्यू रहेगा सर, वेल कॉर्प पे? सी ब्रेकआउट आप कहां बोल रहे हो कि ब्रेकआउट दिया? ब्रेकआउट का एरिया इसका इसके ऊपर है, ये है अल्टीमेट ब्रेकआउट का एरिया। अच्छा इसके ऊपर ही अच्छा इसको बाय करना ज्यादा बेटर रहेगा ना। अच्छा। अभी इसने ब्रेकआउट कहां दिया है? अभी तो रेजिस्टेंस पे है ये, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन, क्लियर मैंने कट। थोड़ा नीचे स्प्लिट किया था रेजिस्टेंस लाइन, इसलिए थोड़ा मैंने बोला ओके, सोचा। अगर आप बोल रहे हो कि इसका ब्रेकआउट दिया है तो, बट इट इज नॉट एडवाइस कि इतने मतलब ऐसे वाले टाइप को ट्रेड लो। अगर आपने इधर ट्रेड लिया होता कि इस एरिया का ब्रेकआउट है तो ठीक बात है। ओके, इस एरिया का ब्रेकआउट तो इसके ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से, 163 के ऊपर। तो अभी आपकी एंट्री गलत हो गई थोड़ी। इसकी एंट्री सेफेस्ट एंट्री है अराउंड 166, और ऊपर एंट्री होगी तो अराउंड 162 रुपीज। अच्छा, तो ओके, फिर आज इसका आगे मतलब मेरे को एवरेज करना पड़ेगा या सर क्या करूं, मैं अभी होल्ड करूं see, थोड़ा? I would not suggest anyone to average any stock, because averaging will lead to more kind of averaging whenever the price keeps on falling, so it becomes a habit. Okay, now Ronak ji, Hello. हाँ जी, There are indices for banking sector and yeah, metal sector, but what are the indices for the fertilizer and see, there are no hospital? such kind of indices for fertilizer or tea, coffee stocks or something like that. Okay. Either you can use simple commodity index for that, or uh, you have to make your own index by using the market cap, free float market cap of those stocks. What do you Can suggest? The quote, market cap or a P ratio we should on in the top 10 criteria? सी मार्केट कैप आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, इंडिया में वी आर यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर मेकिंग द इंडेक्सेस, सो इट इज नॉट अ ग्रेट टास्क फॉर मेकिंग एन इंडेक्स ऑफ like fertilizer stocks, or of making of making sugar stocks or paper stocks. You can make index of any stocks. Just what do you have to do? You have to just download the list of the stocks, arrange it in ascending descending order, multiply it, and have the market cap, free float market cap, and according to their market cap add, make the index. तो आप उसका YouTube पे देख सकते हैं, how to make an index and Yeah, yeah, something like that. yeah. I know, but do we need to change in on a monthly basis or quarterly? We should change that because the market cap ups and downs. देखो मेरे हिसाब से, अगर आपको देखो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी न्यू है। मैंने सोचा था बहुत बार कि एक खुद के इंडेक्सेस बनाने को, बट आई हैवंट अप्लाइड इट। सो सजेस्ट व्हाट द पर्सन ऑन द यूट्यूब इज सजेस्टिंग कि हाँ, because see I have not used it in my trading style, so I can't, to be honest, I can't suggest, right? It is Okay. better to use, अगर आप ट्विटर पे या किसी और को पूछ लीजिए कि कोई अगर कस्टम मेड इंडाइसेस यूज करता है तो हाउ ही मैनेजेस दैट। अदरवाइज यू कैन फिक्स योर ओन कि हर मंथ चेंज करने का या हर क्वार्टर चेंज करने का, व्हाटएवर द थिंग इज, जस्ट फॉलो दैट रूल, दैट इज इट। And there are videos of P ratio they are following, and some are the market cap. So I was so much confused. No. Always, all the indices should be made indexes. Yeah, you can use Google Sheet for a custom index. Definitely, you have to use free float market cap, not market cap. Okay, आपको Okay. फ्री फ्लोट मतलब क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट इनटू शेयर प्राइस। अब है ना, पता है ना आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है? नहीं, मैं सीख लूंगा, कोई नहीं। ओके, फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब क्या है? अब समझो कोई कंपनी है जिसके 100 शेयर्स है टोटल में। अब ऐसा होगा कि 50 शेयर तो कंपनी के शेयर होल्डर के पास, आई मीन कंपनी के ओनर के पास में या प्रोमोटर के पास में। तो 50 शेयर क्या है मार्केट में, फॉर एग्जांपल एफआई, डीआई, रिटेलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इज 50 इंटू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, शेयर प्राइस 100 है तो 50 इंटू 100, तो 5000 is the market cap, free float market cap. But what is the total market capitalization?
100 into 100. I hope you have understood. Yes. है ना? तो free float market capitalization is used for our trading. I mean in India. Okay. Okay. Any other doubt, Jayanti ji? Hello. Thank you for the good presentation and a very simple explanation. I want to have two doubts to clear. One, like how to trade like NIT. You see, it goes up in a day high up to 12% and then closes only 7% up, like 5 to 6% up. It will drop the same day. Definitely, देखो कोई भी स्टॉक इतने हाई मोमेंटम पे एट द एंड ऑफ द डे जनरली सर्वाइव नहीं करता है. व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली देखो जिन्होंने स्टार्टिंग में खरीदा था, इफ आई एम बाइंग at the start of the day and if I am getting 12% in a single day, do you think a person will hold till the end of the day? No, he will book profit na, right? मेरे को एक दिन में 12% आ रहे हैं, पर people wait for 2 weeks 3 weeks to gain 12 then 15% profit, and if I'm getting in a single day, at the end of the day I would normal psychology says you should book a profit, right? Because you're getting 15% in a single day. What else do you want? So it is not advisable to enter into a stock if it is moved more than 4 to 5% in a single day. मतलब क्या? अगर स्टॉक का मूवमेंट 4-5% हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें एंटर करना इज नॉट गुड, बिकॉज यू रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल. सिंपल. Yeah, but if I have holdings, what I have to do in such type of scripts? देखो अगर आपकी होल्डिंग है ऑलरेडी और स्टॉक 12% ऊपर है और आप बुक नहीं कर रहे हो, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो? आई मीन, डू यू वांट 20% रिटर्न or 50% return? Go up for next few days. Will it go up or that's what because every time I'm. Okay, see what will happen is generally if a stock has moved already in a 10-12% in a single day, generally it will consolidate the next few days. Simple example बताओ, live example. Z. Can you see? It has moved up in a single day and then consolidation. It has moved up in a single day and then consolidation. Why? Because देखो अब stock, there are stocks that give only 15% return in a whole year, but your stock is moving 15% in a single day, so it needs to cool down. Similar example Tata Motors. All the stocks that move drastically up, they will then again move in a sideways zone. Understand? तो आफ्टर फ्यू डे अगर आप उस दिन पे बेच नहीं रहे हो, तो अगले दिन वो कुछ होगा कि ऐसा बड़ा कैंडल बना हुआ है और फिर अगले दिन कुछ ऐसे कैंडल बनने लग जाए. एंड आई हैव शेयर्ड यू मेनी एग्जांपल्स. ये देखिए इधर टाटा पावर देख लो. ऑल द एग्जांपल्स आर रियल टाइम एग्जांपल्स. एंड ये देखिए इट हैज मूव्ड अप एंड नाउ मूविंग साइडवेज. Okay. So is it to book exit? It is not like breakout stock that in the next few days I may get more. No. देखो अगर आपको एक ही दिन में 12% स्टॉक मूव कर रहा है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल वन टू एंटर इनटू दैट स्टॉक. एंड अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है, तो व्हाट यू कैन डू इज यूज मूविंग एवरेज, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टू ट्रेल दैट. मतलब क्या? अगर स्टॉक 21 के नीचे क्लोज होता है तो आई वुड एग्जिट, और अगर या फिर 10 के नीचे क्लोज होता है तो आई वुड एग्जिट. तो इसके बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं. यू हैव टू लुक मोर अपॉन दैट. इन we'll talk about that in some other session, how to trail stop losses in such scenario, right? Thank you. Clear. The second is like the BEL, Bharat Electronics type. See, that's also same. It goes slowly 3-4% in a day, and then it drops. But overall, what happening is in uptrend. So I am saying it goes to from 180, it goes to 200, then drop back to 180. Now, in such scenario, your finally what should be your stop loss is at around this area. Why? Because it is continuously taking support on this area, 196. And if this breaks down, then definitely it will fall till here. Okay. So simple use of support and resistance work greatly in market. And I use the same only. See, I use the same simple support and resistance to make the money that I'm trying to make.
not advanced, any kind of advanced tool. You will not find me selling any kind of technical indicators like buy sell signals and anything like that. We are using only simple price action of support, resistance, trend line, volume. That's it, and that is more than enough to make money. Thank you very much. Yeah. Rangarajan ji, sir, may question put? Yeah, I would ask everyone. Just ask your doubts as soon quickly. Sir, one thing, let's say if I wanted to set a stop loss, so is that has to be set up every day in the morning 9:15, or how is it, sir? Yeah. If you. So no, let's say I got an entry today. I bought a stock. Now I wanted to set a stop loss. So every day, let's say I bought it at say 103 rupees. My stop loss is at 95. Now every day the orders are getting cancelled. So 9:15 every day I need to take a stop loss order. Okay, so you are asking whether should you update your stop losses every day or something like that. Okay, right. So in such scenario, you have to trail stop loss based upon your own mental. देखो मैं क्या करता हूँ, मैं stop loss डालकर रखता नहीं हूँ सिस्टम में. I simply use alert in case of stop losses also, so that if my stop loss hits, I will check it. See, why using alert is important and not putting directly order is sometimes it may happen. You will see. This is a very common scenario. There is a big red candle. Okay, sometimes it may happen on 1 minute chart. There is on 5 minute chart. There is a candle like this and like this. Wick is more bigger than the body. हाँ, ये बहुत बड़ा बन जाता है. अगर आप इसको 1 minute में देखोगे, ये मेरे साथ अभी हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, recovery was very fast. हाँ, अगर एक कैंडल में बड़ा ऑर्डर फिल होता है, तो हो सकता है कि एक ही कैंडल में बहुत. एक सेकेंड ना, मैं आपको दिखाना था लाइव एग्जांपल. ये मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ था. Sir, I don't understand Hindi. Please. Okay, okay. If I keep a stop loss order, can you see this candle? Yes. This candle, can you see? Yes. If I keep a stop loss order in a system, this will get executed in somewhere in between. Correct. So stop. And if I look at the chart after 5 minutes, it was just what it is. It was just a single order that was getting filled, and that's why the price went in a single spike. It went 2 to 3%, and then it got filled, and then price moved up on the normal area. Right. Okay. So this is a common thing that you will find in more. Not in FNO stocks, but apart from FNO stocks, ये बहुत ही common scenario. This is a common scenario that you will find it. So it is not advised to put system SL when trading in cash. Okay. I'm not talking about futures and options. Okay. Okay. Got it. Focus on my words. I'm not talking about futures and options. I'm talking about only cash trading. So futures of cash trading may put alert on that price. If you see that the fall is genuine, or if the volumes have begun or something like that, so exit on that. Exit on the next candle. But if I would have exited on this candle, I would have lost. I would have booked loss. Or ऊपर से price has moved up from this at around 3%. Right? Yes. So this kind of candles, मैं आपको और example बताता हूँ where I exited. I had to exit. ये देखिए, ये एक और example. 1 second. No problem, sir. Can you see this 2 candles? Yes, sir. Clear. Yeah. If you look at 5 minute chart, you will find the same candle. मतलब क्या? What will you find? Single candle like this, one small like this, and big this kind of big of 5 to 6% in this chart. ये जो chart है, these 2 charts. Okay. It is just simply that the market moved there to fill up the orders. हाँ, and ये बोल सकते हो कि और अगर if you had kept stop losses all the weak hands, those who had kept stop losses, or all the people those who panicked in a single candle, देखो ऐसा हो सकता है. If you see on a 5 minute chart, you see that the stock has fallen 5%, right, on a single 5 minute chart. What will happen? You will get panic. Simple. Yes. So, yes. Definitely, if you keep that order in the system, you will get exit. But if you wait again for 1 5 minute chart, you will see
this is a most common scenario that sometimes may happen in some where stocks are little bit less liquid. मतलब क्या? Volumes are less. Okay, this will generally not happen in FNO stocks, but in small cap, mid cap stocks where volumes may be sometimes less or something like that, or sometimes a big market order is placed on market order, and hence all the orders will get filled in a single go, and that is what causes the shakeout. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Any other doubt that you want to ask? Anyone else? So, Manoj ji, yeah. yes, sir. Actually, I want to ask 21 SMA or 21 EMA, which is more precise and better. 21 EMA is more better than 21 SMA. Why? Because exponential moving averages will price in recent data. मतलब क्या recent data जो है recent की जो price action हुआ था उसको वो price करेगा अंदर, मतलब क्या calculation में, और 21 SMA will just calculate the normal average of the whole 21 days. So 21 EMA is better than 21 SMA. There you can find bunch of videos on YouTube on which is better and why. So you can refer that for more detailed understanding. But 21 EMA is better, and I always use that. Sir, for long term even? For long term, you have to use 200 exponential moving average, not 21 and 15. Okay. Okay. Thank you, sir. I have shared many PDFs and I have shared many PDFs and threads on moving averages, how you can use it in long term. Definitely Yes, you sir. can go through that. और नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, फाइल सेक्शन में आपको मूविंग एवरेजेस पे पूरा फाइल मिलेगा. Just refer that. Okay. Thank you, sir. So I have a question. Yeah. So we have like 15,000 stocks, right? So how we'll get to know or maybe identify which one is in verge of breakout or maybe retest? See, you can use charting.com for using breakout stocks. और इसके मैंने I have already shared the breakout stocks की screener मैंने already share किया हुआ है. So you can refer that. ये देखिए 52-week breakout stocks. So this will give you stocks that are breaking out of 52-week high. Okay. Similarly, I have applied volume confirmation, and if you want to set only Nifty 500, then use Nifty 500, or you can select the index that you want to trade. For example, mid cap 100, small cap 100, or something like that. So this will give you limited stocks, and again you can filter it out based upon your manually looking at the volumes, looking at the institutional buying in the sideways trend, and all the things. Okay. अगर ऐसा होता कि स्क्रीनर से ही काम होता तो why wouldn't everyone you have just use the screener and put it in the in my algorithm, right? Yeah. You have to understand. Okay, so you will get 10 to 15 stocks every day, 10 stocks every day. Now you have to select. The main criteria is which one to select from those 10 stocks, and that is what will change your difference. That is what will affect your return, because it may happen 10 stocks are getting into that. You are getting 10 stocks into that screener, and I am choosing A and you are choosing B, for example. Simple. A broke out and A broke out successfully, moved 20%. B broke out but failed. Oh, it may happen, right? Yeah. So this is whole stock selection criterion. मतलब इसके ऊपर तो काफी बहुत बड़े regarding stock selection or swing trading, इसके ऊपर we have a paid session on that on Sunday, where you can use where we use many kind of confirmations to understand which one to buy and which one to sell. और उसके बारे में मैंने already message किया हुआ है ग्रुप पे. अगर if you want to attend, just DM me on Telegram or WhatsApp. I will share the details with you. तो ये बहुत, this is not a simple, this buying a breakout is not as simple as it looks. Why? Because 50% chances are there of failure, 50% chances are there of successful. Okay, but most of the time you will end up in 50% failure. Why? Because you're not using confirmation like volume, relative strength, moving averages, the trend of the overall trend of the stock, overall trend of the market. So everything has to be priced in, when to buy, when not to buy. So that is a lot of whole other level of 2 to 3 hours of session that you have to look. I mean, that you have to attend for that. Cool. Thank you, sir. Yeah. Teco BZ B2 Rushikesh. Yeah, sir. Thanks a lot, sir.
या थैंक्स लॉट सर. एक्चुअली सर मैंने एक पोजीशन लिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स. पहला तो सर तो उसका रिजल्ट में 7 फोल्ड प्रॉफिट था. सेकंड उसने पहला सपोर्ट तोड़ा था और दूसरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास था. जो 1240 था 1240, तो मैंने 1245 पे लिया था. सर अभी वो नीचे ही जा रहा है. टाटा स्टील तो वो नीचे ही जा रहा है सर. तो मैंने गलती कहाँ पे की और कौन से फैक्टर्स गलती मुझे कहाँ पे की है पहली बात तो हाईलाइट कर, मतलब ये. हाँ, गलती कहाँ की है मैं वो बताता हूँ. सिंपल गलती ये की है कि स्टॉक को पहले आपने उसका रिजल्ट देखा. सी स्टॉक का रिजल्ट देख के अगर लोग प्राइस, इफ यू थिंक कि स्टॉक का रिजल्ट देख के प्राइस ऊपर जाता है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज द रिजल्ट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? You know, I know the result is multifold, the result has increased multifold. तो इससे do you have an edge over that thing कि ये नॉलेज लेकर आपको कुछ एज मिली है कि रिजल्ट 7x है? तो रिजल्ट इज should not be a criteria नहीं for सर. buying any kind of stock. First thing, okay, let me finish. Second thing is, this is a whole session, 2-hour session that I 2 to 3 hours of session that I have on breakout trading with relative strength and MACD. तो इसका आप देख रहे हो कि as soon as, for example, as soon as ये एक लाइन है relative strength की लाइन, तो as soon as the line goes into the red area, that should not be bought ever. Okay, सिंपल. अभी मैं उसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि अगर ये मुझे ये लाइन ग्रीन से रेड हो रही है तो इसको कभी खरीदना ही नहीं चाहिए. तो इससे आपका एक ब्रेकआउट फेलियर या एक गलत ट्रेड में फंसने का चांस कम हो जाता है. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज, ऑलरेडी इट इज मूविंग साइडवेज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आप साइडवेज स्टॉक में क्यों एंटर कर रहे हो? सर एक्चुअली उसमें 10 से 15% का डिप मिला था और 1240 के पास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था सर. तो मैंने 1245 पे एक्सिक्यूट किया. हाँ, ओके फाइन. तो ये स्टॉप लॉस हिट होने पर 1240 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यू बॉट एट एग्जैक्टली एट द सपोर्ट. तो सपोर्ट ब्रेक होने पर व्हाई डिडंट यू एग्जिट? ऑब्वियस की बात है, सपोर्ट ब्रेक होने पर आप किसका इंतजार कर रहे हो? रिट्रेस बैक. वाह. सी होप, देखो जिंदगी में होप रखना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रेड में होप रखना, देखो जिंदगी में जीने के लिए होप रखना जरूरी है, बट ट्रेड में जीने के लिए होप अगर रखोगे तो मरोगे. सिंपल. होप इज अ गुड थिंग बट ओनली इन लाइफ, रियल लाइफ, एंड नॉट इन ट्रेड्स. होप करोगे कि ये वापस से स्टॉक प्राइस कॉस्ट पे आए और फिर निकलोगे, तो उससे अच्छा इधर ही निकल जाते. देखो कभी भी कोई भी ट्रेड में सपोर्ट ब्रेक होता है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू यू, बट कोई भी ट्रेड में सपोर्ट ब्रेक होता है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू होल्ड इट थिंकिंग कि इट इज गोइंग ऑन द नेक्स्ट सपोर्ट, देन आई विल एवरेज इट अगेन, और इट विल रिवर्स फ्रॉम द नेक्स्ट सपोर्ट, इट विल अगेन कम बैक समथिंग, यू विल. ये सभी जो चीजें है ये खुद को तसल्ली देने के लिए है, बट और ये सब चीजें जनरली होती नहीं है. अब आप लॉरस लैब्स का एग्जांपल दे रहे हो, देख लो. I think whole retail community is stuck in this. अब ये एक strong support था. Can you see this is a strong support? An ideal person should not have held this stock after this. और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल काम करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं कुछ. वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड इन दिस. सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट कब, देखो सपोर्ट लिया, रिट्रेस किया, ब्रेक डाउन आया, सपोर्ट लिया, रिट्रेस किया, अब ब्रेक डाउन आएगा. अगर ये ब्रेक होता है तो आई थिंक इट इज गोइंग, लॉरस लैब्स इज गोइंग ऑन 380 रुपीज एंड नो वन कैन स्टॉप इट देन. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. और देख रहे हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन रेड होती जा रही है. So if you buy a stock that is having a red relative strength line, that means you are buying, that means अगर आप शेयर के मुंह में हाथ डाल रहे हो और खुद मरना चाहते हो और कुछ नहीं. I mean I am using phrases to make you understand. Okay. सर मतलब अभी एग्जिट करना ही बेटर होगा. Yeah, I think you don't have any idea. I mean you don't have any other option apart from this. अगर एक और ऑप्शन है कि अभी लॉस बुक मत करो और बड़ा लॉस बाद में बुक करो, या फिर अभी ऑप्शन है कि अभी लॉस बुक कर लो
और हो सके तो बाद में जब ट्रेंड चेंज हो तब एंटर करो, so that your money is not getting stuck into that stock. Okay, that is important. Because if you are staying in a downtrend, you don't know when will the trend change. You don't know when will the consolidation will get over. So lot of unknowns are there. You don't know. Lot of things are there which you don't know. But you in an uptrend, you know this is my stop loss. I am in the right trend. If the trend changes, I will exit. And during an uptrend, you know कि या मुझे एक इंस्टीट्यूशनल फोर्स है जो बाय कर रही है स्टॉक, इसलिए ऊपर जा रहा है, और जब स्टॉक नीचे आता है तो इंस्टीट्यूशनल फोर्स है जिससे वो स्टॉक नीचे आ रहा है. ओके, we'll just finish fast. Sir, one thing. So RSI and RS are different, sir? Yeah, RSI and RS is completely different, and we have a whole 3-hour session on that, where we use RSI, we use relative strength, moving averages, और इसके पहले भी हमारा एक सेशन हुआ था, and I got wonderful feedback. मैं वापस से वो पोस्ट शेयर करता हूँ. You just check it out on my Telegram group. आपको अगर आपको लगता है, if you want to attend, then definitely, and I can promise you कि it is worth more. जो उसका फीस है, it is around 300 rupees, but it is worth more than 10,000 rupees. I can guarantee you after the session. Joining, sir. So that is the thing that you can attend for more relative strength and everything like that. Yeah. Okay, Fanisha ji, you just message me on WhatsApp regarding your question. I would just ask other people. Okay. Janesh ji, एक simple relative question था. मतलब we have been referring much on this 21 EMA. For once दिखाओगे TradingView में कैसे करते हैं? How do you do that? I have free version. I tried to subscribe, but somehow due to the new RBI policy, I was not able to somehow renew the thing. Okay. नहीं, आपको बस फ्री वर्जन में यूज कर सकते हो. You just type 3EXPO. Okay. You will get 3 exponential moving averages. Okay. This is a free ticket. इस टिकट को क्लिक करोगे तो आपको एक ही इंडिकेटर में 3 मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो. ठीक है. Using a single indicator, you can plot 3 moving averages. Okay. And आप 3x4 basically. हाँ. Sorry, बोलिए. Sorry, I'm not interested. Please. Settings में जाकर 21, 50 और 200, whatever that you want to apply. और अगर आपको visibility check करनी है तो you can select the visibility, or if you want to see that 21 in a chart, only 21 should be visible. So just click on this. If you want to see only 200, just click on this. So, okay. Accordingly you can see that. तो अभी मैं 21 पे select करूँगा तो 21 दिख जाएगा. Okay. In free version only 2 views are allowed, so we'll have to remove one and probably put this. Okay. नहीं, 2 views कहाँ पे बोला है? You can use 3 indicators in TradingView free version. Okay. तो अगर आपको 3 इंडिकेटर यूज करना है, यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन 2, एंड थर्ड यू कैन यूज इज MACD. अगर MACD करेक्ट. MACD RSI तो है, they are already part of them, so we'll add one more person. ठीक है Janesh, thank you. This was a very nice session. Thanks for this. काफी like I think Manish was saying, so काफी learning मिला इसमें. Worth the time. Yeah. Sir, can I ask you something? Yeah. Ask. We'll just cover the last doubt and we are towards the end of the session. Yeah. Okay. Hello. I hope you had a wonderful time, everyone, and you might have understood a lot of things today. Just go and watch this webinar again if you want. I mean, I will share the recording again. So just go and watch it again so that you will understand once more. And lot of questions have been answered. Almost 45 minutes of questions have been answered in this. So almost everything will be getting cleared if you watch the whole session.